गुड मॉर्निंग एवरीवन ईएसपी क्लासेस रे आपन स्वागत। आज आम पढ़ा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रो पार्ट 5 जो या पूर्व मु चारिटा वीडियो ऑलरेडी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विषय रे डिस्कशन कर सारछि। सो शॉर्ट नोट विषय वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर। बेले बेले गोटे एग्जाम रे मध्य 5 ରୁ 6 मार्क क्वेश्चन पकाए। सो जति कि मु डिस्कशन करछि आ जति कि भीतर भी पढ़ो देखो सब जन क्वेश्चन सेटु ही आसीथिबो। या पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कशन करबा शॉर्ट नोट सरला पर सेथिरे मते देखियो प्राय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मध्य ये प्रोवाइड करछि। देखो एथिरु ही सब क्वेश्चन आछे। ओके चलंत हम स्टार्ट करबो। So measurement of RLC, measurement of RLC विषय में जानिबा। So RLC माने हम कोन जानि छै resistance load, inductance load and capacitance load. So type of bridge को केते प्रकार ब्रिज यूज करबे ना ब्रिज कहे गेले दि प्रकार। One is DC bridge another is the AC bridge. So DC bridge कोन तो DC bridge रहला जेडे कि हमर पावर सोर्स कोन रहबो ना DC बैटरी रहबो। एंड एसी ब्रिज रे कोन रहबो ना सोर्स ऑफ एंड ऑसिलेटर एसी सोर्स रहबो आ कोन रहबो ऑसिलेटर थ्रू रे ही रहबो। ओके सो द डिटेक्टर कोन रहबो एथे डिटेक्टर रहबो डीसी गाल्वानोमीटर रहबो आ एथे डिटेक्टर कोन रहबो ना एथे वाइब्रेशनल ऑफ गाल्वानोमीटर 5 to 200 of hertz and telephone of detector 200 hertz 5 kilohertz and tuned amplifier रहबो। ओके सो नेक्स्ट वन देखिए बैलेंस कंडीशन रे कोन दनिया इथरे बैलेंस कंडीशन रे पीएस इज इक्वल टू बैलेंस कंडीशन रे पीएस इक्वल टू क्यूआर रहबो एंड इथरे बैलेंस इज इक्वल केते से z1 इक्वल z1 into z4 इक्वल टू z2 into z3। सो इथ देखो एठ देछि z1 ये हला z1 ये हला z2 ये हला z3 ये हला z4 एंड हला p एटा हला r एटा हला q एंड एटा हला s। सो हम इथरे कोन देछि बैलेंस कंडीशन रे बैलेंस करने ps into इक्वल टू qr त माने एट कोन रहबो एटा हमर ps is equal to qr रहबो। ओके एंड कोडर ना डीसी ब्रिज रहबो एसी ब्रिज कोन z1 into z4 और z2 into z3। सो इथरे कोन रहबो ना z1 into z4 इक्वल टू z2 into z3। सो z1 माने कोन एटा हला z1 आ z4 हला कोन एटा हला z4। सो एटा हला हमर z2 एटा हला हमर z3 यार अपोजिट ऊपर रहबो। ओके देन नेक्स्ट देखियो कोन एंड आहुर मध्ये हे परबो अदर θ1 plus θ4 और θ2 plus θ3। ओके सो किमा हमें किमति मध्ये कहि परबो सो एटा अछि एंगल जडे रहछि θ1 plus θ4 and θ2 plus of कार θ3 रो आकु मध्ये हम नै कि मध्ये करि परिबा। ओके एंड so use of कोन ना मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ओनली यूज आकु मेजरमेंट कर दे रेजिस्टेंस मेजरमेंट करबा पई एंड आकु व्यवहार कम पे कर देता है ना एसीबीएस को ना मेजरमेंट ऑफ एल सी एफ ए क्यू फैक्टर एंड डी फैक्टर एंड रिलेटिव ऑफ परमिटिविटी। सो रिलेटिव परमिटिविटी मध्ये मेजरमेंट करबा पई हमें एसीबीएस यूज ऑफ करथि। ओके सो नेक्स्ट पॉइंट देखिबा मेजरमेंट ऑफ ए रेजिस्टेंस। तो जदि हम रेजिस्टेंस हम जानिबा सो रेजिस्टेंस मेजरमेंट करब कोन ना तीनटा जिंस थाए गुटे होची लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट गुटे होची मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट अनदर इज आवर हाई रेजिस्टेंस ऑफ मेजरमेंट। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लेस देन ऑफ 1 ओम। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस केते थिबो ना लेस देन ऑफ 1 ओम थिबो ताला हम कोन कहबा लो रेजिस्टेंस है आ मीडियम रेजिस्टेंस केते ना 1 ओम टू 100 ऑफ 5 ओम पर्यंत थिबो बा 1 ओम is greater than of केते r resistance is greater than of 1 किलो ओम पर्यंत तो सेटा हम कोन कहबा is the medium resistance तो। ओके जदि 1100 of किलो ओम रे अबव जोडा रहबो से कोन कहबा that is called high resistance of
पाइबा। ओके, सो दैट एथरे कोन मेजरमेंट करे लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट एमीटर वोल्टमीटर मेथड रे, डीसी पोटेंशियोमीटर मेथड रे, केल्विन डबल ब्रिज ऑफ मेथड रे। कि मीडियम कोन हबो ना वोल्टमीटर एमीटर मेथड रे मधे हे परिबो, व्हिटस्टोन ब्रिज रे मधे मेथड हबो, एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड रे हबो, एंड ओम मीटर मेथड रे मधे हबो। एंड हाई रेजिस्टेंस कोन हबो ना हाई रेजिस्टेंस हला लॉस चेंज मेथड मन रखिबो, गोटे होची लॉस चेंज ऑफ मेथड रे, मेगर रे, एंड हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर रे। सो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ मेथड रे मधे मेजरमेंट हेई परिबो। ओके, सो तापर देखिया मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, जो हमें ब्रिज देखिथिले या पूर्व तीटा ब्रिज देखिथिले, ଜାଣିଥିଲେ ଯୋଉ ବ୍ରିଜ ପଢୁଥିଲେ, ସୋ ଡିସି ବ୍ରିଜ ଆଣ୍ଡ ଏସି ବ୍ରିଜ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ। ସୋ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମେ କଣ ନା ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ଇଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ବ୍ରିଜ, ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ବ୍ରିଜ ଯୋଉଟା କି ବାଲାନ୍ସ କଣ୍ଡିସନ କଣ ରହୁଛି, R1 is equal to R2 into R3 divided by R4। ସୋ R1 ଏଠି କଣ R1 ରେଟ୍ ଯଦି ବାହାର କରିବା, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାହାର କରିବା, ସେ ଦେଲା ଏଟା କଣ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର R2, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର R1, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର R3, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କେତେ R4। ସୋ R1 ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, R1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ନା R2 into R3। R1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ଆସିବ ନା R2 into R3 ଏଠି ଦେଇଛି। R1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ R2 into R3 divided by of R4। ସେମିତି L1 ଯଦି କାଢିବା, L2 into R3 divided by of R4। L2 କାହିଁକି ରହିଲା, କାହିଁକି ନା L2 ସହିତ ଯୋଉଟା କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେଇକି ରହିଛି। ଓକେ ଓକେ, ଇଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ କୋड କନେକ୍ଟ ରହିଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି, ଏଣ୍ଡ ଇଏ ଅଲସୋ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟେ ରହିଛି ହେଲା। R2 ସହିତ କଣ ରହିଛି ନା R2 ବଦଳରେ ଆମେ L2 ନେଇଛେ, କାହିଁକି ନା ୟା ପୂର୍ବରୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କାଢିଲେ R1, ସୋ ଏଥିରେ R2 କାଢିତେ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା R2 ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ L4। ସୋ ଅଲୱେଜ ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ 23/4। ସୋ 23/1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 23/4। 23 ମାନେ କଣ ନା 2 ର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହବ କିମ୍ବା 2 ର ଇଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ହବ ଇଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ କେସ ରେ, एंड 3 ର କଣ ହବ ନା 3 ର ହେଲା ଦିଟା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହବ। ସो ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହବ, ଏଇଥିରେ ବି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଆଉ 4 ରେ କଣ ଆସିବ ନା 4 ରେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହିଁ ଆସିବ। ଓକେ, ଆମେ କେବଳ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବା 2 କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ସो ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ କଣ, କାପାସିଟନ୍ସ, ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ଇଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ବ୍ରିଜ ଆଣିଲେ, ସେ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ କାପାସିଟନ୍ସ ବ୍ରିଜ କଣ, ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ କାପାସିଟନ୍ସ ବ୍ରିଜ ହେଲା ବାଲାନ୍ସ କେସ କଣ୍ଡିସନ। ବାଲାନ୍ସ କଣ୍ଡିସନ ଆମେ ଆସୁଛି କଣ ଆସିବ ନା R1 is equal to say 23 R2 into R3 divided of R4। ओके, सो R4 ଟା ସଦାବେଳେ କଣ ରଖିଥିବ, ଏଇ ଦେଖ R4 ହେଲା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। R4 ଟା କଣ ହେଇଥିବ, ଭ୍ୟାରିଏବଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ମନେ ରଖିଥିବ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ओके, so R4 variable of resistance। so then q যদি আমরা এটা L1 কাঢ়িব, L1 কাঢ়িলে কোন আসিব, L1 is equal to R2 R3 and C4। so তিনটা মল্টিপ্লাই করব, and যদি q ফ্যাক্টর কাঢ়িবা আমি কোন করবা, ওমেগা L1 divided by ওমেগা R1 equal to ওমেগা R4 into C4, R4 into C4। ओके, सो कहार ना क्यू फैक्टर, एडा हला हमर क्यू फैक्टर मन रखथिबो, एटा होचे हमर कोन क्यू फैक्टर रो, एडा हला हमर कोन L1 R रो, एडा हला हमर R रो रेजिस्टेंस रो, इंडक्टेंस रो, एंड क्यू फैक्टर रो। ओके, सो द मीडियम ऑफ क्वालिटी फैक्टर ऑफ द कॉइल मेजर बाय दिस ऑफ ब्रिज केते 1 लेस देन ऑफ q लेस देन ऑफ 10। सो मन करा q is greater than of 1 and 10 is greater than of କାଠର ହବ q ଠାରୁ ହବ ତା ସହିତ 1 ଠାରୁ, ମାନେ 1 ରୁ ଏକାଧିକ and 10 ରୁ କମ କହିବାକୁ ଗଲେ, 1 ରୁ ଏକାଧିକ 10 ରୁ କମ କଣ ଆସିବ ନା q ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହିଁ ଆସିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହେ ବ୍ରିଜ କଣ ନା, ହେ ବ୍ରିଜ ର ବାଲାନ୍ସ କଣ୍ଡିସନ ରେ ସେମିତି ସେମ L1 R2 R3 and R4। L1 କଣ ଦେଇଛି ନା, L1 କୁ ଯଦି ମତେ କାଢିବାକୁ ପଡିବ, ସୋ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ଲାଗିଛି, ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ आवर କଣ L1। ଆଉ କୋଉଠି ଇଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ଲାଗିଛି କି ଲାଗିନି, ସୋ ଆମକୁ କଣ L1 କାଢିବାକୁ ପଡିବ ନା R2, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ R1 ହେଇଥିବ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ R2 ହେଇଥିବ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ R3 and ଇଏ R4, ଏଇଟା ହେଲା କାପାସିଟନ୍ସ। ଓକେ, ସୋ ଏଇଠି କଣ ଦେଇଛି L1 is equal to R2 then
R2, then R3, then R4 divided by 1 plus omega square R4 square C4 square देखो R4 कहीं देला तो ये R4 सहित C दिटांग हम लागि छि उनो कैपेसिटेंस लागि छि ओके सो ये मते हमर कोन छि ए तल फेस को नै छि 1 plus of omega square into R square कहार हबो 4 हबो एंड C square 4 रो मध्ये हबो हैला ओके नेक्स्ट देखिया ओन ब्रिज कोन ना ओन ब्रिज रो बैलेंस कंडीशन ने L1 equal to R2 R3 and C4 L1 R2 and R3 and C4 सेंते R1 जदी काढिबा हमरो C4 by C2 into R3 C4 by C2 into R3 okay then Q factor कोन रहबो Q factor रहबो omega L1 by R1 or otherwise out मध्ये हे परिबो omega R2 into C2 मध्ये हे परिबो so breeze can be used in measurement of unknown inductance पे measurement होरा पे ଆମେ କୋଉ ବ୍ରିଜ ୟୁଜ କରୁଛେ ନା ଓନ୍ ବ୍ରିଜ ୟୁଜ କରୁଛେ and incremental inductance କରିବା ପାଇଁ କଣ ୟୁଜ କରୁଛେ ନା ଓନ୍ ବ୍ରିଜ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ so ଏଇଟା ହିଁ क्वेश्चन ହୁଏ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन so that Anderson bridge कोन Anderson bridge हला हमर इन बैलेंस कंडीशन रे R1 is equal to R2 and R3 so R1 is equal to केते रहबो देखो एथरे एंडरसन ब्रिज रे केतुटा रेजिस्टेंस केतुटा इंडक्टेंस लागिस मन ये गोटे इंडक्टेंस लागिस ये गोटे रेजिस्टेंस ये गोटे रेजिस्टेंस ये गोटे रेजिस्टेंस ये भी गोटे रेजिस्टेंस ये गोटे रेजिस्टेंस ये गोटे रेजिस्टेंस ये गोटे कैपेसिटेंस ये लाउन डिटेक्टर ओके सो एटा कोन कहछ एंडरसन ब्रिज ऑफ कहां so एंडरसन ब्रिज रे कोन देखिबो ना R1 जदा हम काढिया R1 is equal to R2 into R3 divided by R4 minus of small r. So small r1 মানে কোন রেজিস্টর ইন্টারনাল রেজিস্টর so that সেমতি L1 is যদি কাढिबा না C R3 by R4 into R4 plus of R2 into plus R2 into R4 ओके सो एटा कोन कहा जिवो ना एटा हमर L1 रो फॉर्मूला ओके एटा हमर R1 रो फॉर्मूला बुझिला सो लो क्वालिटी फैक्टर की इज लेस देन ऑफ द कॉइल बाय मेजर विथ सो को ब्रिज रे लो क्वालिटी फैक्टर ऑफ मेजरमेंट करा देता है एंडरसन ब्रिज ए गोटा पॉइंट ही मन रखतो काहे ना तुम डेरिवेशन रो प्रॉब्लम आसीबोनी कि क्वेश्चन आसीबोनी सेना हमें एठी जानिले यार फॉर्मूला रा कि सेतिर क्वेश्चन आसे लो क्वालिटी फैक्टर कोठे हमें मेजरमेंट कराउस को ब्रिज रे दिस एंडरसन ऑफ द ब्रिज बोला में क्वेश्चन ओके so next देखिबा measurement of a capacitance so measurement of a capacitance कोन सर measurement of a capacitance हमें दीटा मेथड रे बुझ परिया कोन गोटो होची हमर डिसाउट्स ब्रिज मेथड आउटला स्केलिंग ब्रिज ऑफ so disouts scaling method कोन इन बैलेंस कंडीशन C1 बैलेंस कंडीशन C1 is equal to C2 and R4 by R3 and this bridge is used for the measurement of a perfect capacitance by lossless capacitance value कौन यूज करबा lossless capacitance okay so capacitance को ब्रिज रे मेजरमेंट करा देता है दैट इज डिसाउट्स ऑफ ब्रिज so scaling bridge कौन इन बैलेंस ऑफ कंडीशन इन बैलेंस कंडीशन C1 is equal to R4 divided by R3 into C2 सेमते R1 is equal to कौन C4 divided by C2 into R3 so disaffection factor गले D is equal to केते आसीबो ना W C1 upon T1 is equal to R1 एटा R1 is equal to केते आसीबो W upon C4 into R4 okay so out point मन रखे this bridge is for the measurement of a capacitance disaffection factor और capacitance को measurement करिया पई हमें कोन यूज करछे ना स्केलिंग ब्रिज यूज करछे so dielectric losses relative permeability मध्ये measurement कर दे dielectric losses relative permeability मध्ये measurement करते and a properties of insulating material so insulating material रो properties कोन अछि मध्ये हम ताको measurement of करछे okay next point देखिबा हमें कोन measurement of frequency so हमें frequency measurement पई को ब्रिज यूज करछे ना वाइन ब्रिज यूज करछे very important questions very important
सो ये जो जगह बहुत कम पिला जानते फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट पे हमें हॉर्स यूज करते जदि ब्रिज मेथड हम यूज करबा ताले ब्रिज मेथड को ब्रिज हम यूज करे फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट दैट इज कॉल्ड एज अ वाइन ब्रिज सो इन दिस ऑफ अ बैलेंस कंडीशन इन दिस बैलेंस कंडीशन f is equal to केते 1 by 2 pi r1 r2 c1 and c2 मेजरमेंट करबा ओके ई फार्मूला ओके So next देखिए कौन the bridge is used for measurement of a frequency जिसका कोट में व्यवहार करता है ना measurement of a frequency इनका इन व्यवहार करता है so next point देखिए हमें current of a sensitivity so current of a sensitivity को हमें शॉर्ट में कौन कहते हैं ना SI बोली कहते हैं जोटा कि थीटा बाई हमारा Igmm ओके mm for micro ampere ओके mm पर ऑफ माइक्रो एम्पियर मन रखते यार यूनिट हैला कोन mm कार यूनिट मन रखतो mm पर ऑफ माइक्रो एम्पियर सो वोल्टेज सेंसिटिविटी कोन ना वोल्टेज सेंसिटिविटी हैला mm पर ऑफ वोल्ट जोटा कि थीटा बाय vth ओके vth जोटा sb कह जाय से ब्रिज सेंसिटिविटी कोन कह जाय ना ब्रिज सेंसिटिविटी हमर SB is equal to theta by SB is equal to theta by of del R divided by of R into mm. Only R unit है mm. Okay. So हमें जानिले upon the measuring instrument विषय about most important measurement question every exam रे 2 marks आस्था है मन रखथिबो that is called as a transducers so transducer कोन ना transducer हैला convert one form of energy into other form of energy गुटे form of energy रो out energy को से convert करेबो that is called as a कोन transducer also called up a pick up कोन कह other word रे pick up बोली कह देते कोन कह देता है pick up बोली कहा जाता है so transducer देखिबा कोन क्लासिफाइड करा जायछि transducer basically हमें क्लासिफाइड करछि according to type हेले primary transducer and secondary transducer active transducer and passive transducer analog and digital of transducer so primary कोन हैला bellows button tube thermistor हैला हमर primary transducer and LVDT हैला कोन हमर secondary of transducer so एथरे देखिबा हमें कोन एक्टिव ट्रांसड्यूसर कोडा ना piezo electric photovoltaic cell and thermocouple हैला हमर active transducer and LVDT thermistor LVDT रहइबा thermistor रहइबा RTD रहइबा capacitive transducer रहइबा एटा हम कोथरे जीवो सेटा हमर passive transducer जीवो एनालॉग एलिमेंट कोन रहइबा एनालॉग हैला LVDT thermistor strain gauge एसब हमर एनालॉग then photoelectric optical encoder and digital of tachometer that is called as kona is the our digital transducer okay so primary transducer and mechanical of elements विषय जानिबा कोन जानिबा primary transducer and mechanical elements so type देखिया बोले containing in a spindle and pins or finger and displacement of a displacement operation काम यार कोन जो हमर स्पिंडल अछि बा पिन अछि और फिंगर बोले हम जो कहू छै तार काम कोन डिस्प्लेसमेंट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑपरेशन सो इलास्टिसिटी ऑफ अ मेंबर कोन ना प्रोबिंग रिंग्स बॉर्डन ट्यूब बिलो डायफ्राम एंड स्प्रिंग और कौन पे यूज कर देते हैं ना फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट में यूज कर देते हैं प्रेशर टू डिस्प्लेसमेंट में यूज कर देते हैं प्रेशर टू डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट so spring hela post displacement diaphragm pressure to hela below hela pressure to burden hela amar pressure and proving of a ring hela amar kona force to displacement so mass देखिया हला कौन mass हला sesame mass हला में forcing of a function displaced to displacement measuring करू and pendulum of a scale of a force to displacement manometer हला pressure to a displacement सेमते थर्मल कपल रे कोन ना थर्मोकपल रे हमें कोन मेजरमेंट करना टेंपरेचर और टू इलेक्ट्रिक करंट अप बायोमेटालिक रे हमें टेंपरेचर टू डिस्प्लेसमेंट एंड थर्मिस्टर रे टेंपरेचर टू चेंज इन अप रेजिस्टेंस आउट रहता है कोन ना हाइड्रोफेनोमेट्रिक रे मद ऑपरेशन करा जाय थाए जोटे कि अनदर पॉइंट हैला कोन स्टैटिक होची स्टैटिक प्रकार आउट होची हमर हाइड्रो तो स्टैटिक एटा हम कोन कहछे ना फ्लोट बोली कहछे आ अनदर डे कोन कहछे ना हाइड्रोमीटर बोली कहछे फ्लोट मींस हला कोन ना फ्लूइड लेवल टू डिस्प्लेसमेंट फ्लोट हला फ्लूइड लेवल टू डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोमीटर कोन स्पेसिफिक ग्रेविटी टू डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोमीटर हला स्पेसिफिक ग्रेविटी टू डिस्प्लेसमेंट ओके सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए डायनामिक जोटा कि डायनामिक टाइप कोन देछि डायनामिक हला ऑरफाइस वेंचुरी पिटो ट्यूब बेंड्स ट्यूबनेस
इस जिनसर कम कौन orifice our velocity of pressure, measuring our velocity of pressure इसको से and pitot tube velocity of pressure, bends of velocity of force and tubeness of linear to of angular of velocities. Okay, so measurement of a displacement कौन है? Measurement of a displacement and strain gauge. So measurement है ना कहते ना force displacement. आपको measurement कौन कर देते हैं ना force displacement हो जाए. Other name आप कौन कर देते हैं? piezo resistivity gauge बोली कर देते हैं. So piezo resistivity gauge बोली other word में कहता है. So gauge factor है del r by r divided by del l by l. बा other word से del r by r divided by epsilon. Okay, so epsilon रो काढियो कोन काढियो epsilon हैला हमर strain जोडे कि हमें कहउचे del l by l काढियो and gf is equal केते 1 plus of 2 gamma 1 plus of 2 gamma. So this one is a formula. Okay, so formula को टिके रिमेंबर रखिथुओ. So poisonous of a factor कोन ना poisonous factor जोडे कि gamma वाला में को रिप्रेजेंटेड कराई छी lateral strain बोले हम कहबा और longitudinal of strain मिल के जोडे कि minus of del d by d and del l by l बोले हम कहउचे. So that value of gauge factor केते रहबो ना for metal रे 1.5 to 1.7 value रे 1.5 to 1.7. For a semiconductor केते रहबो ना more than of 100. Then type of कोन रहउची कोन type ना bonded strain gauge होची unbonded strain gauge or the thin foil of strain gauge, thin film of strain gauge and a semiconductor of strain gauge को हमें व्यवहार करूचे. Okay, next point देखिबा कोन. Next point है linear variable of a differential transformer LVDT. So LVDT रे काम कोन LVDT है linear variable of a differential transformer and एक कोन होचे ना inductive transformer तो कहल अछि. आ काम कोन रहउचे ना converting linear motion into electrical of a signal. आउ कोन रहबो ना LV रहला signal of a primary winding and a 2 secondary winding. So primary winding रो secondary winding को से signal of पहुंचो and displacement of range के तरह वो 125 mm to 250 mm 125 mm to 250 mm. Okay, so that properties देखिए कौन property है हमारे inductive transducer और passive transducer. So LVDT है हमारे उटे inductive transducer कौन होती किंबा other word passive transducer बोले हम कौन. So measure and current linear displacement of EMF बोली मेथड कर. So construction केमते हितवा ना construction है single primary winding and a 2 secondary of winding. गुटे single primary winding थियो आ दुईटा हमर कोन हितवा secondary winding हे कि थियो कोथरे ना LVDT रे मन रखथिबो. Okay, the secondary winding are connected such a way that the induced EMF cancelled out of the other. So कोन secondary winding रे एमिति भाबरे induce हबो EMF जाफल रे किसी कोन हबो the induced EMF cancel out the other. तो दीटा को इधर cancel करेगा. So range केते रहबो ना 0. plus minus 0.1 mm to 25 mm. Advantage कोन ना high sensitivity and use up to 25 kilohertz. यूज अप टू केते में यूज कर पारे 25 किलोहर्ट्ज पर हमें व्यवहार करबा हाई सेंसिटिविटी पे हमें आपको मेजरमेंट कर. So disadvantage कोन sensitivity to stray magnetic of a field and sensitivity to mechanical of a vibration. जेतरे sensitive अधिक हो से mechanical vibration भी होबो जाफले magnetic field का हम कोन stray losses भी मत दबो. So application कोन use for in a primary transducer for the displacement of a measurement. Always remember that the other transducer uses for a constant displacement of a measurement करिया पे व्यवहार करछे. And a secondary of a transducer force measurement. So primary transducer डाला कोन displacement measurement and secondary transducer डाला कोन होता है ना हमर force pressure को measurement करिया को थाए. Okay, नेक्स्ट पॉइंट देखिबा हमर galvanometer. So galvanometer कहया गेले कोन ना टाइप होचे डिफरेंट टाइप ऑफ galvanometer अवेलेबल रहिछि. कोन अवेलेबल रहिछि गोटे होचे हमर tangent galvanometer and stick of galvanometer, mirror galvanometers, and ballistic of galvanometers. So ballistic of galvanometer. So d-arsenal galvanometer कौन जानिबा. So measurement in a low current and depleting torque TD equal to BINA equal to GA. BINA और GA बोले हम कहबा. So control torque है K theta for F
फाइनल स्टेडी डिप्लेशन होला थीटा एफ फाइनल स्टेडी डिप्लेशन ए थीटा एफ को हम कोन कहउछे फाइनल स्टेडी डिप्लेशन बोली हमें कहउछे इक्वल टू NBA by K and I is equal to G by F K into I so as B is हम कोन कहउछे B को हम फ्लक्स डेंसिटी कहउछे I को हम करंट थ्रू द मूविंग कॉइल कहउछे and N है नंबर ऑफ टर्न कॉइल कहउछे and A is equal to length into diameter जोटा कि एरिया ऑफ कॉइल मध्ये कहउछे and G है हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ कांस्टेंट ऑफ galvanometer so G है हम galvanometer रो कांस्टेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट so टाइप कौन देखियो ना टाइप है ये सस्पेंडेड ऑफ सस्पेंडेड कॉइल galvanometer पाइवट कॉइल और वेस्टर्न galvanometer बोले हमें कहउछे ओके नेक्स्ट पॉइंट देखिबा पियाजो इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्रांसड्यूसर पियाजो इलेक्ट्रिक ऑफ ट्रांसड्यूसर ये बोले वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इथर मध्ये एक मार्क आसे ओके सो दैट प्रॉपर्टीज कोन प्रॉपर्टीज हला इट इज ए एक्टिव ट्रांसड्यूसर आको हम कोन कहउछे ना एक्टिव ट्रांसड्यूसर कोटे एंड यूज इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेशन आको व्यवहार कोन पे कराउछि ना डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेशन पे हमें फोर्स पे व्यवहार करूछे फोर्स आर आल्सो बीन प्रेशर पे मध्ये व्यवहार करूछे सो मेटल कोन यूज करूछे मेटल है नेचुरल ऑफ ग्रुप quartz and russell of salt हम quartz and russell of salt व्यवहार करछे सिंथेटिक ग्रुप रे कोन ऑफ बेरियम टाइटेनियम एंड पोटेशियम ऑफ डाइपोहाइड्रोजन फॉस्फेट को हम व्यवहार करछे कोथरे मेटेरियल रे सो फार्मूला कोन देता चार्ज टू सेंसिटिविटी D इक्वल टू Q by F और C by N बोले हमें अदर से सो वोल्टेज कोन रहबो so voltage sensitivity कोन आसो voltage sensitivity हला so charge हला एटा हमर कूलम मन रखथुवा ओके कूलम and voltage sensitivity कोन G is equal to E by P और V माने से M divided of L so Q हला हमर कोन चार्ज and T हला कोन thickness of crystal and E हला हमर electric of field intensity and P हला हमर कोन pressure of applied okay then advantage देखिबा कोन सेल्फ जनरेटिंग ऑफ ट्रांसड्यूसर ए जो ट्रांसड्यूसर क्रिएट करबो निजे निजे एंड गुड फ्रीक्वेंसी केते रहबो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स अप टू 20 किलोहर्ट्ज पर्यंत रहबो जोटा कि डिसएडवांटेज कोन रोछ ना आउटपुट वोल्टेज इफेक्ट ड्यू टू इन टेंपरेचर ऑफ वेरिएशन सो टेंपरेचर वेरिएशन जो गुरु आउटपुट वोल्टेज रो इफेक्ट मध्य देखा दबो सो नेक्स्ट देखिबा मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर सो टेम्परेचर मेजरमेंट करे पे हम को ट्रांसड्यूसर यूज करछे सो आरटीडी व्यवहार करछे आ कोन करछे थर्मोकपल व्यवहार करछे थर्मिस्टर व्यवहार करछे पायरोमीटर व्यवहार करछे बायोमेटालिक ऑफ स्ट्रिप व्यवहार करछे सो आरटीडी यूज करा होचे जो हमर 6000 डिग्री सेल्सियस अप टू 6 sorry up to 600 degree এটা not 0 এটা লা ডিগ্রি 600 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত মেজারমেন্ট করে সো থার্মোকপল अप टू কেতে 1400 ডিগ্রি পর্যন্ত মেজারমেন্ট অফ করছে থার্মিস্টর কেতে 1000 কুলম টু 3000 অফ 300 অফ ডিগ্রি মেজারমেন্ট অফ করছে ये 100 হবো not 1 ये ला 100 so pyrometer कहते हैं ना 12000 C2 and 3500 degree Celsius हम कहउछ ओके एंड रूम टेंपरेचर कहते हैं 27 डिग्री ऑफ सेल्सियस सो एटा बोला किसी रॉन्ग अछि हम ताको करेक्ट करी कि मन तो तुमनको देखाई देबी सो मेजरमेंट ऑफ टेंपरेचर सो मेजरमेंट टेंपरेचर सला देन रेजिस्टेंस ऑफ आरटीडी हम जानिबा आरटीडी कहते रहबा 200 डिग्री सेल्सियस टू हम 650 डिग्री ऑफ सेल्सियस मन तो मेजरमेंट कर दे सो चेंज इन रेजिस्टेंस इन हीटिंग so resistance टा हम कोन करे चेंज करी कि हीटिंग एलिमेंट को दबा so formula कोन del r is equal to alpha del t r 1 alpha del t r of r1 so जो मेटेरियल में यूज करछ को मेटेरियल यूज करछ मेटेरियल वाला प्लाटिनम वाला अप टू 530 डिग्री सेल्सियस एक्यूरेसी प्लस माइनस सब 0.5 डिग्री सेल्सियस so कॉपर कोन हबो कॉपर वाला अप टू 150 डिग्री ऑफ सेल्सियस फिर प्लस माइनस ऑफ 0.2 डिग्री सेल्सियस को व्यवहार कर so nickel कोन दोछ nickel होछ up to 3116 degree of celsius plus minus of 0.2 degree of celsius में okay accuracy so advantage कोन ना fast response अभी हम कोन करबो ना fast response of करबो okay fast response and small size and low temperature fast response small size and low temperature कोडा rtd मन रखतो rtd fast response small size and low temperature compensation is not required very important question compensation is not required and disadvantage कोन bridge circuit need to power supply so जतल bridge circuit मानेबा ताको कोन दा पड़े power supply दा पड़िबा
that cost is also in high याको मदा हमें cost high इफेक्टिविटी रखिचे ओके देन देखिया कोन थर्मोकपल कोन ना सी बैकअप इफेक्ट कोथरे हमें चेक करा दे परिबा दैट इज आवर थर्मोकपल सी बैक इफेक्ट प्रिंसिपल ये काम करछ ओके सो दैट इट इज एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर आपको कोन कहछ एक्टिव ट्रांसड्यूसर सो थर्मोकपल को प्रिंसिपल काम करछ क्वेश्चन आसे एग्जाम रे ओके वेरी इंपोर्टेंट So range केते रहबो 270 डिग्री सेल्सियस टू 28 28 डिग्री ऑफ सेल्सियस पंद रहबो फॉर्मूला कोन आप E इज इक्वल हमर A del T by plus B del T रो स्क्वायर ओके द टाइप डेजिग्नेशन जो रहउची T टाइप J टाइप B टाइप E K Y ओके T J B E K Y and copper iron platinum rhodium chromium and chromel and iron इस जिन सारा कौन पॉजिटिव ऑफ मेटल होची को मेटल होची ना पॉजिटिव नेगेटिव मेटल कौन कांस्टेंट एंड प्लेटिनम एंड कांस्टेंट आ कौन यूज कराबो एल्यूमिनियम यूज कराबो कांस्टेंट यूज कराबो सो इथरे मध्य प्लेटिनम रहउची ये भी मध्य प्लेटिनम जहार 0 डिग्री ऑफ टू 1400 डिग्री सेल्सियस रहउची ये हमर कांस्टेंट ऑफ फॉर्मूला के ई टाइप है हमर माइनस ऑफ 196 डिग्री टू 900 of 99 degree celsius पंद रहुଛି so that a chromol जोटा कि k बोले हम कहउछ 190 डिग्री टू 371 डिग्री सेल्सियस पंद रहुଛି so सबुठर हमर हाईएस्ट जदी कहय गेले कोडा आछे ना 1400 of डिग्री सेल्सियस जेटा b आछे so ए जो टेबुल ला टिके मन रखि दो आज पंद थर्मोकपल क्वेश्चन केबे को पचारिनी टेम्परेचर बेस जदी क्वेश्चन पचारला इज बेटर जेतो हमर एडे भी बुक रे नाही एनिमी बुक रे ओके देन नेक्स्ट देखिए थर्मिस्टर कोन थर्मिस्टर है हमर नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ क्वेश्चन ए क्वेश्चन एग्जाम रे पकाए सो टेम्परेचर रेंज केते रहबो ना 1000 टू 300 डिग्री ऑफ सेल्सियस रेजिस्टेंस ऑफ रेंज केते रहबो 0.5 ओम टू 0.75 थर्मिस्टर कोन थर्मल प्लस ऑफ रेजिस्टेंस कॉलेज ऑफ थर्मिस्टर बोले हमें कहउछे ओके देन देखिए सेंसिटिविटी कोन सेंसिटिविटी थर्मिस्टर कैलकुलेट दी बगार गोटे सेंसिटिविटी थर्मिस्टर और अछि लिनियरिटी सो सेंसिटिविटी है थर्मिस्टर जेटा कि SRTD thermistor is greater than of काट रो SRTD होबो and also greater than of दा काट thermocouple होबो okay and linearity कोन ना RTD is greater than of thermocouple and is greater than of thermistor so measurement of कोन करिया प्रेशर देखिया प्रेशर रहला मेजरमेंट ऑफ गॉस कोन यूज करछे गोटे होछ हमर लो प्रेशर गॉस पिरानी ऑफ गॉस हम यूज करछे केते रु ना 10 minus 1 10 1 to 10 ରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଛି 1 ରୁ 3 ନବ ଯୋଉଟା କି ଆମେ 10 ନଉଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ସୋ ପିରାନି ଗ୍ୟାस ସो थर्मोकपल वैक्यूम गैस केते रहବ अप टू 10 to 22 and melody of gas केते रहବ ना इज ग्रेटर देन अप 10 ऑफ सो थर्मिस्टर ऑफ वैक्यूम गैस रहब 22 सो ई क्वेश्चन रे आसीबनी ई क्वेश्चन रे तमरो नाही इज द हाई लेवल ऑफ एग्जाम ई हैला हाई लेवल डिप्लोमा डिग्री बना पे क्वेश्चन सो जानि थे दरकार हमर मेजरमेंट ऑफ कोन पिरानी गैस कोन थर्मोकपल वैक्यूम गैस कोन and melody of गैस पर थर्मिस्टर वैक्यूम ऑफ गैस आयनाइजेशन ऑफ टाइप ऑफ वैक्यूम गैस मते कोन एसु जिंसरा जानिया जरूरी तर केते रेंज रोची बा प्रेशर रो रेंज बोले हमें कहउछे सो हाई प्रेशर ऑफ कोडा ना ब्रीड गिमान ऑफ गैस तो हाई प्रेशर बोले हमें केते एटीएम में ना 105 ऑफ एटीएम सो मैकेनिकल गैस फॉर द लो प्रेशर पे कोन यूज करा होची बटन ट्यूब बिलो डायफ्राम को मैं लो प्रेशर पे व्यवहार करूचे so next देखिए data acquisition of the systems data acquisition system कोन it is information to the collect and store the and distribution of the information से कोन करियो कलेक्ट करिवो स्टोर करिवो तापर कोन करियो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करिवो डाटा ओके so data acquisition system कोन are used to measurement and record the analog oscillation आर व्यवहार कोत में करा होची measurement and record the analog of signal पे व्यवहार करा जावछि इन basically about two different way दी प्रकार रछि गुटो होची हमर signal which originate from in direct measurement of electrical quantity and second is signal which originate from of using transducer गुटो होची transducer व्यवहार करी कि मामे डायरेक्ट मेजरमेंट कर परबा इलेक्ट्रिक क्वांटिटी so data acquisition of a system कोन ना सिग्नल कंडीशनिंग जोटा कि हम इसको कहउचे एम्प्लीफिकेशन पे आइसोलेशन पे फिल्टरिंग पे एक्साइटेशन पे एंड लिनियराइजेशन पे हमें डाटा एक्विजिशन सिस्टम को व्यवहार कराउचे सो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट सिस्टम कोन
analog data acquisition systems. Okay, measurement है कौन the system deals with the information in analog forms. So component कौन ना component है transducer, signal of conditioning equipment, calibration of equipment, integrated of equipment, visual display of a device, analog of a recorded, analog of a computer, and high speed of a cameras and of a TV equipment पे हमें कौन use करते ये component व्यवहार करते use करा होची when the wide frequency or width require when the lower of accuracy can be tolerated wide of frequency width required तो wide of frequency दरकार पड़ियो से समय रे कोन when the lower accuracy can be tolerated lower accuracy can be tolerated so next one देखिबा last हला digital acquisition of a system 10 minute 11 हाँ digital acquisition system कौन ना measure a digital of quantities make a consist of the number of description or discontinuous of the form so component कौन रहउछि ना transducer रहउछि signal conditioning equipment multiplexer signal converter auxiliary equipment digital recorder and digital of printer ମଧ୍ୟ रहउछि so use code करा जाउछि ना use करा जाउछि when the physical quantities being minority has narrow bandwidth and a high accuracy, narrow bandwidth and a high accuracy, and low power of channel cost is required. Okay, so thank you very much. The more video tiki watch करथिबारु. So next video रे मो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आनिबी और नेक्स्ट नो चैप्टर से तामे जड़ता होबा जहाँ फले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रे जहाँ भी वीडियो पढ़ेइछि जो 4-5टा वीडियो अछि वर्तमान सुधा सो वीडियो टिके थरेटे मात्र एटलीस्ट देखंतु तापर जदी कोनोसी जिंस बुझी हो नै देन पीडीएफ मध्ये अछि पीडीएफ को बुझंतु पीडीएफ को देखि के आकु बुझिया चेष्टा करन 100% ए शॉर्ट नोट रो कोनोसी क्वेश्चन बाहर को आसीबो नै ओके थैंक यू वेरी मच पुन देखाबा नुआ क्लास रे नुआ वीडियो रे पुन थे नुआ चैप्टर सहित आम वीडियो टी लाइक करिवे शेयर करिवे एंड सब्सक्राइब करिवे आ जदि किछि कोन चेंज करियार अछि कमेंट माध्यम रे मध्ये हमकु जणाइबे ओके थैंक यू ओके प्रतीक्षा बे सोना जाउथला ना सोना जाउ नथला